No country will be addressed specifically, but the current affair developments will be addressed, right? So you will cover the current affair portion of USA with Pakistan and the regional development in South Asia and Central Asia, even including Middle East. Number one thing. Secondly, we'll go through the discourse that will create your holistic understanding, right? Because China current affair से रिलेटेड है, और चाइना का जब इशू हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान के साथ तो डेफिनेटली ग्लोबल एंगल डिस्कस होता है फिर उसके अंदर। तो जो मुझे भेजा है आपने, आई थिंक माला अली ने जो भेजा है, हमने शायद इसी तरह चलना है। सो टॉपिक हम पीछे हम कर क्या रहे थे, मुझे क्लियर पिक्चर नहीं आ रही। आई थिंक वी वर डिस्कसिंग चाइना एंड पाकिस्तान, इंडिया रिलेशन विद पाकिस्तान। एम आई राइट? जी, ओके। तो आगे भी यही चलेगा अब ज्यादातर, लेकिन यूएसए इसके अंदर ऐड हो जाएगा, यूएसए इसके अंदर ऐड हो जाएगा। और जब कंटेनमेंट ऑफ चाइना की बात करेंगे तो मिडिल ईस्ट भी, सो यूएसए आप लिख लें, यूएसए और मिडिल ईस्ट भी आज से आपके लेक्चर में ऐड होने जा रहा है। तो अब आप इंटीग्रेटेड, इसलिए कह रहा हूं ना, इंटीग्रेटेड है मीन डिफरेंट कंट्रीज के इंटरेस्ट डिस्कस हो गए यहाँ। किसी चीज की डेवलपमेंट को मेक सेंस करने के लिए उनके इंटरेस्ट को देखना जरूरी है। फिर इसके बाद जब हम कंटेनमेंट पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप किसी चीज को जब कंटेन करते हैं तो आपके इंटरेस्ट है उसके अंदर, या तो आप अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर रहे हैं या किसी के इंटरेस्ट को स्टॉप कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो थ्यूसिडाइड ट्रैप असल कहानी कहाँ है? चाइना को समझने के लिए एक चीज आपने मैंने आपको बताई थी शायद, थ्यूसिडाइड ट्रैप, ये पढ़ाया था मैंने आपको। थ्यूसिडाइड ट्रैप, ट्रैप की स्पेलिंग ठीक लिखिएगा, मैंने गलत लिखा है। तो पहले पढ़ते हैं थ्यूसिडाइड ट्रैप, ठीक है? ये क्या होता है थ्यूसिडाइड ट्रैप? एक्चुअली तो ये एक फिलॉसफी है थ्यूसिडाइड की। एक जो ग्रीक स्टेट्स थी वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करती थी बार बार। जो ग्रीक स्टेट्स थी ना वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करता रहती थी। जो अर्ली स्टेट डेवलप हुई ग्रीक के अंदर तो उनका एक परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट रहता था। conflict for regulating the powers, conflict for maximization of the power, and conflict for developing the sense of dominancy on others. Right? So power maximization was and still now is inevitable. Do you believe this, by the way? It's my question to you all. Power maximization in sense of economy, in sense of military, in sense of diplomacy. Do you believe it is inevitable? One cannot live without these three powers I have mentioned before.
Nayar, Zakir, do you believe you will live without power? And okay, you are here in this job to get your CSS exams and to get your 17 posts. अब इन पोस्ट को हासिल करने के लिए आप यहाँ है ना, ठीक है? ऐसा ही है। तो आप वो क्यों करते हैं? बाकी जॉब से ज्यादा इस जॉब को क्यों प्रेफर किया जाता है? To regulate the resources or to increase your infrastructure or increase your assets, I mean economy. तो यहाँ वन साइड ऑफ पावर है। आप ब्यूरोक्रेट्स जब बनेंगे तो आपकी कौन सी वाली पावर आपको मिलेगी? यहाँ रिसोर्सेज को रेगुलेट करने की पावर। इकोनॉमिक पावर तो नहीं मिलेगी। इकोनॉमिक पावर बनने के लिए तो फिर आपको बिजनेस करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो थ्यूसिडाइड ट्रैप जो है वो ये था कि वहां स्टेट का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इनविटेबल था, वो होता ही रहता था, स्टॉपेबल नहीं था। और फिर वहां से आगे अगर आप चलेंगे तो आप देखें, वहां से अगर आप आगे चले तो फिर आप देखें कि हमेशा ही डिफरेंट स्टेट्स ने दूसरी स्टेट्स को चैलेंज किया है। जब अरब ट्राइब खड़े हुए तो उन्होंने चैलेंज कर दिया था बेजेंटाइन एम्पायर को एंड पर्शियन एम्पायर को। इसी तरह जब इंग्लैंड एज अ पावर आया तो उन्होंने चैलेंज कर दिया था मुस्लिम पावर को। मंगोल्स जब पावर के तौर पर आए तो उन्होंने चैलेंज कर दिया था मुस्लिम बगदाद स्टेट को चैलेंज किया गया था और खत्म कर दिया। इसी तरह जब यूरोपियन आए तो उन्होंने भी चैलेंज किया बाकी तमाम स्टेट्स को और वो खुद एक सुपर पावर बन गए। और फिर अमेरिका आया तो अमेरिका और रशिया के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, कोल्ड वॉर। और फाइनली अमेरिका ने वो वॉर कॉन्फ्लिक्ट जीता एंड यूनिपोलर बन गया 1992 में। इसी तरह अब एक और चैलेंज आपके सामने है दैट चाइना इज गोइंग टू चैलेंज द सुप्रीमेसी of USA in international politics in global village. So clear, my dear? So here again, Thucydides tribe concept is again apply like क्या कॉन्फ्लिक्ट से आप जान छुड़ा सकते हैं? आप कॉन्फ्लिक्ट से जान छुड़ा सकते हैं? मतलब ये मुमकिन है कि चाइना और अमेरिका में कॉन्फ्लिक्ट ना हो और कोऑपरेशन मॉडल पे चले? ठीक है, कोऑपरेशन मॉडल पे चलते हैं 2 मिनट के लिए। तो कब कितनी देर तक चलेंगे? मेरा अगला क्वेश्चन। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि बड़ी सिविलाइजेशन है, सो कॉल्ड सिविलाइजेशन हो गई है और हाईली एजुकेशन है और ह्यूमन राइट्स की बेसिस पर वो वो क्या करेंगे? वो अवॉइड करेंगे वॉर। मान लेते हैं 2 मिनट के लिए मान लेते हैं। और स्टेट जो, तो फिर जब दोनों स्टेट्स के इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट आएगा जिस भी जगह पर,
तो वहां भी वो ठंडे मिजाज का करेंगे मुजाहरा। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कितनी देर तक, मेरा क्वेश्चन ये है कितनी देर तक। ठीक है, वो लड़ेंगे नहीं तो क्या अपने आप को एडवांस करने से भी रोक देंगे? तो क्या एडवांस नहीं करेंगे दोनों? अपने टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट, अपने मिलिट्री के अंदर एडवांसमेंट नहीं करेंगे? और अगर वो करेंगे तो क्या वो बराबर एडवांसमेंट करेंगे किसी फार्मूले के तहत? और अगर उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया कि आपने और मैंने मिलिट्री पावर भी बराबर ही बढ़ानी है, तो क्या वो अपने प्रोमिसेस को पूरा भी करेंगे? अगर करने की कोशिश भी करें तो क्या इन्वेंशन और डिस्कवरी हर मुल्क में, और और जो साइंस की एडवांसमेंट है वो एक जैसी होगी? जब उसमें फर्क आएगा तो एक दूसरे के ऊपर डाउट्स आएंगे। ये नाकाबिले यकीन बात है। और अगर आप चाइना और अमेरिका ये ठान ले कि हमने लड़ना नहीं है, और ये जितना कोशिश कर लें तो भी ये ऐसा नहीं कर सकेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ट्रस्ट डेफिसिट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट, नंबर 2। पहला क्या है? ट्रस्ट डेफिसिट। नंबर 2 कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट। नंबर 3 हिस्ट्री। नंबर 3 difference in environment. Number 4 technology and discoveries. 4 है या 5 है? तो ये 5 रीजंस हैं जो इनएविटेबल कर देती हैं। ये मेरा पर्सपेक्टिव है अकॉर्डिंग टू द बीइंग अ डॉक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशन। आई थिंक ये 4 फैक्टर्स हैं जो इनविटेबल कर देते हैं कॉन्फ्लिक्ट को, एंड दे विल मेक इनविटेबल द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ट्रांजैक्शन थ्योरी। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ट्रांजैक्शन थ्योरी। तो 2 बातें हो गई, थीसिडाइड ट्रैप, और दूसरी टर्म मैं आपको दे रहा हूं पावर ट्रांजैक्शन थ्योरी। पावर ट्रांजैक्शन, तो जब पावर ट्रांजिट होती है फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, सेंटर ऑफ पावर तो शिफ्ट हो जाएगा एशिया की तरफ। अगर तो इसको कभी भी टॉलरेट नहीं करेगा यूरोप एंड वेस्ट, तो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। यह है पावर ट्रांजैक्शन। सेंटर ऑफ पावर की मूवमेंट जब होती है तो भी कॉन्फ्लिक्ट आता है। और समझे कि नहीं यार, आपने मुझे लर्न करना है, आपने मुझे कैच करना है। इफ यू आर नॉट एबल टू कैच मी, यू आर नॉट एबल टू टेक बेनिफिट फ्रॉम मी। So I will not teach like a teacher कि वो रट्टी रटाई चीजें बतानी है। So you have to create the knowledge and you have to go beyond the current affair. तो मैंने 5 रीजन बताई हैं जो कि इनविटेबल कर देंगी बेटा। कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है, एज रियलिस्ट बिलीव, एज रियलिस्ट बिलीव। रियलिस्ट भी यही कहते हैं, नहीं रोक सकते आप कॉन्फ्लिक्ट, होना ही होना है। लास्ट टाइम कौन टाइप कर रहा था पहले ये बताएं? एक दफा अपॉइंट किया है बेटा टाइप करने के लिए किसी बच्चे को, तो फिर बार बार कहने की क्या जरूरत है? यू आर मैच्योर इनफ आई थिंक। मेरी ज्यादातर क्लासेस में मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर फोर्सेस होती है, कर्नल्स लेफ्टिनेंट कर्नल्स होते हैं की क्लासेस में। अच्छा, आपकी जो क्लासेस है, या ये जो आपके, या फिर हम सीएसएस की क्लासेस में, तो मेरी जो ऑडियंस है वो ऑलमोस्ट ऑल मैच्योर है। तो नॉलेज की क्वालिटी पे तो कंप्रोमाइज हम कर ही नहीं सकते। तो टाइपिंग और क्लैरिकल जो काम है वो इतना तो आप मैच्योर हो जाएंगे, एक दफा हमने किया है उसको लिखना चाहिए बच्चे। अक्सा क्या ख्याल है? इज इट राइट? मोहम्मद अली कुराई, मेरी बात समझ आ रही है जिस कॉर्नर तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ? वरना आप कहेंगे आप करते ही जाइए शिकवा, हमको ऊंचा सुनाई देता है।
किसी शायर ने क्या खूब कहा, अब करते ही जाइए शिकवा, हमको ऊंचा सुनाई देता है ना। तो मुझे फिर बता दे कौन करेगा, टाइप कौन करेगा। टाइप करने का ये होता है कि आपके नोट्स बन जाते हैं, आपका फायदा है। अपने फायदे के लिए आप खुद ही अपॉइंट कर लिया करें, मेरे आने से पहले ही आपस में ग्रुप में कर लिया करें कि यार तुम लिखना, तुम अच्छा लिखती हो तुम लिख लेना। तो ये तो नोट्स मेकिंग इज योर ड्यूटी। जी, अभी कोई है वॉलंटियर आपकी क्लास के अंदर, आपने खुद अपने लिए प्रोड्यूस करना है ना। टाइपिंग करता जाए चैट के अंदर या एमएस ऑफिस आप कहेंगे तो मैं स्क्रीन शेयर दे दूंगा आपको। तो अब आपको मैंने क्या पढ़ाया अभी, मैंने क्या पढ़ाया है। कम टू द पॉइंट, मैं अभी आपको पढ़ा रहा था थीसेडाइट ट्रैप एंड पावर ट्रांजैक्शन थ्योरी, और इसके साथ दूसरा अभी लास्ट में क्या बताया, पावर ट्रांजैक्शन थ्योरी। ये दोनों एक ही बात करती है, ये दोनों एक ही बात को मेक सेंस कराती है आपको, और दोनों ये कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इनविटेबल है। और इसी में तीसरी चीज में लिख दिया रियलिस्ट प्रोस्पेक्टिव। तो तीन चीजें हो गई, थीसेडाइट ट्रैप, रियलिस्ट प्रोस्पेक्टिव एंड पावर ट्रांजैक्शन थ्योरी। आगे चलूं बेटा मैं। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं। पहले हम कर रहे हैं इंटीग्रेटेड डिस्कोर्स ऑफ करंट अफेयर ऑन यूएसए चाइना इंडिया एंड रोल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। तो सबसे पहले ग्रेट पावर कंपटीशन इन अरेबियन सी। आप एक एक करके मुझे तरतीब से बताते जाएंगे, ठीक है। जकरिया या अक्सा, अक्सा ने हेडिंग लिखी थी, किसने लिखी थी, माला अली, माला अली की, माला अली। आप हर एक एक पॉइंट जब कवर हो जाए तो बताते जाएंगे। सो ग्रेट पावर कंपटीशन का मतलब ये है, अरेबियन सी के अंदर कौन सी ग्रेट पावर इस वक्त डेवलप हो चुकी हुई है। एक इंडिया है, इंडिया इन अरेबियन सी शेयरिंग द बॉर्डर, एंड सेकेंडली China, as China has reached in Gwadar, as China has reached in Gwadar, सो चाइना एक ग्रेट पावर है। गवादर में उसका बैठ जाना मतलब अरेबियन सी में पहुंच जाना थ्रू सी पैक। और तीसरी पावर जो है वो अमेरिका है। ठीक है। तो ये ग्रेट पावर कंपटीशन अरेबियन सी में क्यों है,
China want to connect itself, लिख लें, China want to connect itself with Middle East to secure energy resources with the Middle East and African region by the shortest दुनिया की मार्केट को कैप्चर करे, इसलिए वो जो उसकी इंडस्ट्री फंक्शनल है उससे भी वो फर्दर आगे बढ़ रहा है और अपनी इंडस्ट्री को मल्टीप्लाई करने जा रहा है, डबल ट्रिपल कर 300 टाइम 200 टाइम 300 टाइम बढ़ाने जा रहा है अपनी इंडस्ट्री को। अभी तक आप चाइना को देख रहे हैं कि बहुत तेजी से आगे आ गया, लेकिन अगर अपनी इंडस्ट्री को वो 200 टाइम बढ़ा देगा या 300 टाइम बढ़ा देगा इंडस्ट्री को, तो दुनिया में चाइनीज तमाम मार्केट्स में होंगे, सिर्फ होंगे नहीं हैं तो आज भी कैप्चर कर जाएंगे उसको। तो so for that reason India is doing same. India want to make itself economic power as it is the fourth largest and the highest power, economic power of the world, fourth biggest power of the world. India is second biggest economic power of the world, and America is number one biggest power of the world. I'm talking about economic power. So number one, number two, and number four अरेबियन सी में मौजूद है, अरेबियन सी में मौजूद है। Number one, two, and four exist in around the Arabian Sea. American are present there in Indo-Pacific on Strait of Hormuz, and American are present on Strait of Malacca. So existence of American on Strait of Hormuz and Strait of Malacca. Strait of Hormuz में उनका सिक्स्थ वॉरशिप है और सिक्स्थ मलाका में उनका 7th वॉरशिप है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वॉरशिप है। तो अमेरिका मलाका में भी एग्जिस्ट करता है और अमेरिका हुर्मुज पर भी एग्जिस्ट करता है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज इन अरेबियन सी, स्ट्रेट ऑफ मलाका इनटू बे ऑफ बंगाल। स्ट्रेट ऑफ मलाका कहाँ है? सिचुएटेड इनटू द in between, situated in between Bay of Bengal and South China Sea.
present in the Arabian Sea. So clear? आगे चलते हैं। तो ग्रेट पावर कंपटीशन समझ आ गया है। तो अमेरिकन आर देयर हियर टू कंटेन चाइना and India and America have same interest to contain China. That's why they are called strategic partner. They are called strategic partner. India and America क्या कहलाते हैं? Strategic partner, because both are sharing same interest of containment of China. China is using Gwadar. China is using Gwadar, that is Pakistani port. So China is being facilitated by Pakistan. That's why Pakistan is a part of this game. तो पाकिस्तान का रोल क्यों बन रहा है भाई? Because you are considered as a facilitator of China, as you have provided Gwadar to China for trade purpose. So you are part of this game, because have provided logistic and strategic supports to China. That's why you are strategic partner of China. So आपने strategic and logistic support दी है चाइना को, आपने ग्राउंड प्रोवाइड किया है चाइना को, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है चाइना को, और आप इसके फैसिलिटेटर कंसिडर होते हैं चाइना के, और आप इसीलिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहलाते हैं चाइना. So clear, my dear? ग्रेट पावर कंपटीशन समझ आया? इन अरेबियन सी. अब आ जाते हैं दूसरी साइड पे. हम जरा एक्सप्लेन करते हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान. तो आप इसको लिखेंगे आउट ऑफ प्रेसिडेंट रिलेशन. ऊपर हेडिंग एक दिया ना मैंने, वो आपकी कवर हो जाएगी. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड आउट ऑफ प्रेसिडेंट रिलेशन. रीजन है उसकी, हम उस पर बात कर लेते हैं. फिर हम पढ़ेंगे अमेरिका और इंडिया क्यों स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहलाते हैं. ठीक है ना? पहले पाकिस्तान और चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनर क्यों कहलाते हैं.
एक तो वजह मैंने बता दी आपको शुरू में ही कि आपकी फैसिलिटेशन है। अब वो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हम इसको शुरू से लेके आते हैं, जरा शुरू से लेके आते हैं। क्या ख्याल है, हो जाए फिर? बड़े अहम पोर्शन में हम जाने लगे हैं। रेडी? रेडी फॉर दैट? अक्सा और माला तुमने लिखना है, जैसे यू आर गुड इन राइटिंग। तो ये आप इसको किसी भी सेंस में कह सकते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कह सकते हैं, आउट ऑफ प्रेसिडेंट रिलेशन कह सकते हैं। तो उसकी पहली वजह मैंने आपको बताई, शुरू से करते हैं उसको, हेरोरिकली उसको डिस्कस करते हैं। दिस पार्टनरशिप स्टार्टेड विद पाकिस्तान एंड चाइना, बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना फ्रॉम 1960 ड्यू टू नॉर्दर्न वॉर थिएटर कॉन्फ्लिक्ट। पहला क्या है? नॉर्दर्न वॉर थिएटर। इन द नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, conflict started as China claimed Ladakh to be the part of Tibet. China published map and a political tract, T-R-A-C-T, tract. China published a political tract map and shoved these territories at a part of Pakistan, China, as a part of Tibet. India rejected the claim. Pakistan wrote letter to China for the explanation of this map. Because China included Ladakh and Gilgit-Baltistan, Sakardu and Gilgit-Baltistan as a part of Ladakh, and Ladakh was a part of Tibet. समझ आई है? चाइना कह रहा है कि लद्दाख मेरा है और सकर्दू और गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख का हिस्सा है। India rejected the claim. Pakistan wrote letter to explain their claim. In 1961, Pakistan voted in favor of PRC, People Republic of China, Mao Zedong regime. In 1962, China excluded the territory from their political map that was claimed by Pakistan. And China entered into its claimed territory swiftly and captured it almost. India confronted China but did not remain successful. Right, my dear? China invited Pakistan to end this conflict, to take Kashmir back. Pakistan did not prefer to do so. We accepted Western advice of Western allies, and did not join the war against India.
So the first war, that is China-India war, held in 1962. Pakistan didn't take part in this war even after the official invitation of China to come in this war and take your Kashmir back. So clear? ये जो मैंने कहा ना, पाकिस्तान supported PRC, I think you have missed it. पाकिस्तान मौजूद तंग तजवीज को सपोर्ट किस में करता है? यूएनएससी के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्शन में वी वोटेड इन यूएनएससी. सो ये जो हमने सपोर्ट किया था, फेवर दिया था चाइना को, मौजूद तंग को, वो पीआरसी में जी यूनाइटेड नेशन में हमने दिया. In 1965, Pakistan went into war against India to take our Kashmir back. But we did not succeed to take Kashmir back due to the failure of Operation Gibraltar and Grand Slam. क्योंकि 62 में हमें नहीं मिल सका, तो हमने फिर 65 में अटेम्प्ट किया इंडिविजुअली कि हम कश्मीर अपना ले लें, जैसे चाइना ने ले लिया इलाका. So we conducted Operation Gibraltar and Operation Grand Slam. After the failure of Operation Gibraltar, we conducted Operation Grand Slam, second operation. But we remained unsuccessful in both operations and didn't secure occupied Kashmir from India. Because Indian attacked on Lahore, and it became very difficult for Pakistan whether to save Lahore or to take Srinagar. हम गए थे श्रीनगर लेने, अटैक हो गया लाहौर के ऊपर. ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम भी नाकाम हो गया. जिब्राल्टर नाकाम हुआ तो ग्रैंड स्लैम किया, वो भी नाकाम हो गया. फाइनली वी रीच्ड ताशकंद एग्रीमेंट 1966. ओए होए होए, आखिर में माला अली लिख रहा है वेदर टू सेव लाहौर और टेक श्रीनगर. श्रीनगर तो हमारे पास था ही नहीं, तो सेव क्या करते उसको? या तो हम लाहौर को सेव करते या श्रीनगर को कैप्चर करते, श्रीनगर को लेते, हासिल करते. तो अगर आपको ये ऑप्शन मिल जाए, इसको एडिट कर दो माला. अगर आपको ऑप्शन मिल जाए कि आपके पास ऑप्शन हो कि आपने लाहौर या श्रीनगर में से एक चूज करना है, तो आप क्या करेंगे?
तो सेम हैपेंड इन 1965 वॉर। तो आपने लाहौर को बचाने के लिए फिर क्या किया? अब लाहौर खतरे में आपका जा रहा था और श्रीनगर के करीब पहुंच गए थे हम। तो श्रीनगर को अगर हम तवज्जो करते हैं तो लाहौर हाथ से निकलता है। तो हमने लाहौर को सेव रखने के लिए हमने ताशकंद एग्रीमेंट किया फाइनली, और श्रीनगर को छोड़ दिया। नहीं समझे? इतनी आसान सी बात है। अब इसको आप यूं लिखेंगे, बिकॉज वी वर doing advancement in Kashmir in 65 war, but the threat of losing Lahore was increasing with the passage of time. क्योंकि अजीज भट्टी शहीद के बाद काफी मुश्किलात शुरू हो गई, लाहौर आपके हाथ से खिसकने लगा। Because your military was engaged in Srinagar and you were having not enough military to secure your Lahore site. तो हम ज्यादा देर तक इंडिया को रोक नहीं सकते थे लाहौर में दाखिल होने से। आप श्रीनगर तो ले लेते जाके, लाहौर भी हाथ से निकल जाने के बहुत कवी इम्कानात थे, गालिब इम्कानात, मोस्ट प्रॉब्ली। ये जो जुल्फकार अली भुट्टो ने 1965 वॉर के बाद नैरेटिव उठाया था याहिया के खिलाफ, इट वाज टोपी ड्रामा। ये सब झूठ था, कहानी थी। उसने झूठ और कहानी को पोर्ट्रे करके अपनी पॉलिटिक्स की बुनियाद रखी। दैट वाज पीपल पार्टी। वो ये था कि वो कहता था कि हम जंग जीत गए, हमें कश्मीर वापस नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमने एक नैरेटिव चलाया था अयूब खान ने पाकिस्तान के अंदर कि वी आर विनिंग द वॉर एंड वी वन द वॉर, हमने जंग जीत ली है, जबकि ग्राउंड पर सिचुएशन डिफरेंट थी। तो वही नैरेटिव क्योंकि चल रहा था कि हम जंग जीत चुके हैं, तो भुट्टो ने कहा कि क्योंकि भुट्टो वजीर खारजा थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, तो वो इस नैरेटिव को लेके अपनी पॉलिटिक्स बनाई कि हम तो जंग जीत चुके हैं, तो हम क्यों कश्मीरी टेरिटरी वापस करें। वो कहता था कश्मीर की जो कैप्चर टेरिटरी हमने जो हासिल की है वो हम वापस ना करें इंडिया को। और लाहौर की टेरिटरी जो है अगर खतरे में है तो माइट भी हम उसको डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं इसमें, आफ्टर ताशकंद एग्रीमेंट द लैंड इंडियन प्रोवाइडेड यू बैक वर ग्रेटर द लैंड यू प्रोवाइडेड देम बैक इन कश्मीर। जो टेरिटरी आपने उनको वापस की वो कम थी इंडिया को जो दी, वो टेरिटरी है जो आपने कैप्चर किया कश्मीर के अंदर, या कश्मीर के अंदर हासिल किया जंग के दौरान। और वो जो टेरिटरी इंडिया ने आपको दी लाहौर साइड से, पंजाब साइड से, वो ज्यादा थी वापस। बिकॉज देयर वाज एग्रीमेंट, ताशकंद एग्रीमेंट, दैट बोथ फोर्सेस विल गो ऑन देयर एक्चुअल पोजीशन बिफोर ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर से पहले आपकी जो फोर्सेस की पोजीशंस थी ना दोनों मुल्कों की, वो फोर्सेस उन्हीं पोजीशंस पर जाएंगी वापस। तो जब हम दो अपनी पोजीशंस पर आए और जब इंडियन भी अपनी पोजीशन पर वापस गए,
तो आपको टेरिटरी ज्यादा मिली, उनको टेरिटरी कम मिली, तो इसका क्या मतलब है भैया? आई थिंक यू आर ऑल मेच्योर। और फिर आपने जो जो टेरिटरी वापस की, दैट वाज मोन्टेनियस, वर नॉट इफेक्टिव। मोन्टेनियस टेरिटरी वाज नॉट इफेक्टिव, वर नॉट फर्टाइल, वर नॉट एक्सपेंसिव, इकोनॉमिकली इफेक्टिव नहीं थी वो। लेकिन जो टेरिटरी आपको वापस मिली, इट वाज इकोनॉमिकली इफेक्टिव फॉर पाकिस्तान, बिकॉज इट वाज फर्टाइल लैंड, एग्रीरियन लैंड। वो समझ आइए, मट्टी की दीवारों। नॉर्दर्न वॉर थिएटर समझ आ रहा है? कश्मीर क्या है, नॉर्थ है कि नहीं? तो ये वॉर थिएटर भी तो नॉर्दर्न वॉर थिएटर हो गया ना। चाइना इंडिया वॉर, पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान इंडिया वॉर, इट्स नॉर्दर्न वॉर थिएटर। Come on the point. The next point in 1963, बाउंड्री एग्रीमेंट विद चाइना। मैं आपको नॉर्दर्न वॉर थिएटर समझा रहा हूं अभी तक सारा। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाए, बाउंड्री एग्रीमेंट। In 1963, Pakistan and China did boundary agreement. They sit together and settled their territorial dispute in friendly environment. According to this agreement, according to this agreement, Pakistan surrendered its claim from the Shaksam Valley. And China surrendered its claim from Gilgit-Baltistan. Pakistan surrendered its claim from the Aksai Chin. Sorry, Pakistan surrendered its claim from the Aksai Chin. And China surrendered its claim from Siachen. Pakistan accepted Chinese claim on Ladakh and Arunachal Pradesh. Well,
China accepted the claim of Pakistan on Kashmir. ठीक है जी? It is called Boundary Agreement, 1963. So, clear, my dear? So, clear, my dear? India alleged Pakistan and China for this agreement and said Pakistan has surrendered 5,000 square kilometer in this agreement to China. Pakistan and China rejected this allegation. India was not happy. India was claiming that was disputed territory which Pakistan and China settled between them, while India was true stakeholder in this territory, true stakeholder for this territory. And it was international issue. It was the issue registered in United Nations organization. So United Nations should solve this issue instead of bilateral dialogue between China and India. Sorry, between China and Pakistan. So India was not happy that how Pakistan and China solely set this issue together. It is a बंदरबांट, right? वो कहते हैं आप इंटरनेशनल इशू है, मैं भी स्टेक होल्डर हूँ इसमें, और ये यूनाइटेड नेशन में रजिस्टर्ड है इशू, तो यूनाइटेड नेशन ही इसको सॉल्व करेगी. आप आपस में बैठकर कैसे सेटल कर सकते हैं ये इशू? So clear, my dear? According to Indian stance, these all territories given to China and given to Pakistan according to this agreement was actually the territories belong to India. India was claiming this territory, and these territories were the part of Kashmir, and Kashmir is a part of international resolution, international issue. बात को समझे आप? उस वक्त ये क्रिटिसिज्म किया था इंडिया ने कि कश्मीर तो इंटरनेशनल इशू है, यूनाइटेड नेशन में रजिस्टर्ड इशू है, और कश्मीर जो है से बिलोंग करती है. तो आप आपस में बैठकर क्यों सेटल कर सकते हैं इस बात को? कैसे कर सकते हैं? बट अकॉर्डिंग टू चाइना एंड पाकिस्तान, these territories do not belong to Kashmir. Number one, these are separate territories. And secondly, if it is a part of international dispute, and if these are the part of Kashmir territory, then Indian should accept the United Nations resolutions and conduct plebiscite immediately. Why are they delaying this decisions? तो एक तरफ से इंडिया ये कहता है कि ये इंटरनेशनल इश्यूज है, दूसरी तरफ इंडिया ये कहता है कि ये यहाँ प्लेबिसाइट नहीं हो सकता.
सकता और वो इंटरनेशनल रेजोल्यूशंस को मानता भी नहीं है। तो अगर एक टाइम के लिए ये कश्मीर का हिस्सा हैं ये टेरिटरीज, और कश्मीर इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, आप इस बात को फिर माने, क्योंकि कश्मीर इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, इंडिया खुद भी नहीं मानता ये बात। और अगर ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट है तो आप इसके अंदर प्लेबिसाइड को, इंटरनेशनल सॉल्यूशन का जो मेथड है उसको एक्सेप्ट करें और इमीडिएटली करें। यू गॉट द पॉइंट माय डियर? जकरिया समझ आया कि नहीं? जाकिर, ये मुझे एक बात बताए, कोई है नेयर जाकिर, कोई है मौला अली, है माला अली, और कोई है, ये सारे जो है हुसैनी मुझे नजर आ रहे हैं। सारे जो है ना, मुझे लगता है इन जितने भी क्लास में बच्चे हैं ये बड़े मुतासिर हैं करबला से, हैविली इन्फ्लुएंस्ड है करबला से, है ना? तो समझ आया आपको बच्चों? समझ आया? इशू समझ आ रहा है? सो पाकिस्तान स्टडी पढ़ रहे हैं या करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, पहले मुझे ये बताएं। ये आपको समझाने के लिए मुझे पीछे जाना पड़ा है, और मुझे ये लगता है कि ये जरूरी है समझाना, बिकॉज स्टूडेंट्स हैव नो बैकग्राउंड, और स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड वो पाकिस्तान स्टडी, वो जो 40 नंबर की आपने पढ़ी है, 50 नंबर की अपने डिग्रियों में, उससे बढ़कर होता नहीं है, तो उनको फिर आर्गुमेंट समझ ही नहीं आते कि क्या हो रहा है। आगे चले। वो माला अली, तुम्हें वो तुम्हारा नाम पढ़ के मुझे वो हदीस याद आ गई है कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। है कोई ऐसी हदीस? है, मेरे ख्याल में लोग इसको कहते हैं ये सही हदीस है। तो अक्सर नाम मौला अली लोग उसको भी फर्म कहते हैं उस हिसाब से, और अहले तशी लोग इसको बड़ा ज्यादा पोर्ट्रे करते हैं, अपने आप को कनेक्ट करते हैं ना वो उनके साथ, हजरत अली के साथ स्ट्रांगली। तो वो मैं इस हवाले से माला अली और मौला अली है। सो माला का मतलब क्या है बेदवे? अच्छा, माला का मतलब हार्लेट की बात कर रहे हैं आप? हार्लेट या नेकलेस? हार्लेट और नेकलेट में क्या फर्क होता है? जाकिर तुम बताओ, हार्लेट और नेकलेस में क्या फर्क है? बल्कि खवातीन बताएं। सो माला आखिर में ला और लगा लो तो मलाला बन जाओ। माला ला को फॉलो करे तो मलाला बन जाए। हम्म। तो जाकिर ने नहीं बताया हमें, जाकिर माला और हार्लेट एंड नेक क्या बताया था? नेकलेस एंड हार्लेट
में फर्क नहीं पता है? जाकिर नहीं पता ना, खवातीन को शायद पता हो। चलें, फिर कभी मूड में होंगे तो आपको बताएंगे हार्लेट क्या होता है और नेकलेस क्या होता है, बड़ी टेक्निकल चीज है। अभी वापस आते हैं। तो क्या बात करने लगा था मैं? नॉर्दर्न वॉर थिएटर की कहानी शुरू हुई है। नॉर्दर्न वॉर थिएटर में जरा एक चीज फिर देखें, तो इस एग्रीमेंट से कौन खुश नहीं है? इंडिया। और वो क्लेम करता है कि वो क्या है, वो ये क्लेम भी करता है कि वो कौन है, वो स्टेक होल्डर है। अच्छा, सो इंडियन conducted operation in 1984, Operation McDood, and they capture Siachen. They capture 2,500 square kilometer of Siachen. Out of 2,600 square kilometer, right? In 1984. It is called Operation McDood. Indian launched Operation McDood in 1984 and captured 2,500 square kilometer out of 2,600 square kilometer in total. So, in 1999, Pakistan conducted Kargil operation to take Siachen back. Pakistan conducted Kargil operation in 1999, but remained unsuccessful. So, in these all operations, China supported Pakistan diplomatically, right? And the recent in 2020, after 2019, China India conflict started on Ladakh and Arunachal Pradesh. China started increasing pressure on Siri corridor and in Dokalam, on Siri corridor and in Dokalam and in Galwan Valley. लिख लो, चाइना ने 19 ऑनवर्ड अभी तक कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट में जा रहा है अगेंस्ट इंडिया ऑन सीरी कॉरिडोर, प्रेशर बढ़ा रहा है ऑन सीरी कॉरिडोर इन गलवान वैली एंड डोकोराम. So clear, my dear? According to Indian stance, अब इंडियन स्टांस क्या है इसके ऊपर?
Pakistan and India, Pakistan and China has become, according to Force magazine, अब Force magazine इंडिया का बहुत credible magazine है, उनका एक security magazine है. According to a security magazine, a very credible magazine of India, that is Force magazine, run by Praveen Sahwani. Praveen, Pravin, Pravin Sahwani, a very credible analyst, defense and security analyst. Pakistan and China has become one front instead of two front. Initially, India was claiming two front war against Pakistan and China. But now they are accepting it has become one front war because China and Pakistan is one instead of two different countries against India. As conflict started against India, so Pakistan and China become one instead of two different front. So they are so united strategically, politically, and diplomatically. So they are so united that look like a one front against India. That's why Pakistan is unmatchable with India. Pakistan is unmatchable with India. So clear, my dear? रेफरेंस इस बात जो मैंने आखिरी पैरा बताया है, इसमें आपने रेफरेंस किसका देना है? फोर्स मैगजीन का रेफरेंस. इंडिया स्टेट ये ओन नहीं करती. अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट इट इज टू फ्रंट. टू परवीन सहवानी इट्स वन फ्रंट वॉर. क्या याद करोगे? अच्छा, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, यू हैव टू कैच मी इफ यू कैन, otherwise you will not have like this lecture in any book or even from the media, social media, or from the internet and YouTube, whatever, any resource. आज आ जाए, अब आ जाए डिफेंस एंगल. अब पाकिस्तान अनमैचेबल विद इंडिया की आपको डीप इनसाइट कर लेते हैं, डीप इनसाइट करते हैं कि पाकिस्तान को क्यों कहा जा रहा है अनमैचेबल विद इंडिया. डीप इनसाइट, जरा गहराई में जाए, थोड़ा सा जरा वो डुबकी लगा के आते हैं नॉलेज के समंदर से, ऐसे थोड़ी सी, ज्यादा नहीं जाऊंगा. आई नो आपका एग्जाम इतना बड़ा नहीं है, आई नो इट्स वेरी कॉमन एग्जाम, मतलब, लेकिन अच्छी चीजें अगर हम करेंगे तो इट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम विल गिव यू मोर बेनिफिट देन कंपैरेटिवली देन अदर्स. ऐसे है कि नहीं? अगर कुछ अच्छा चीज मिल जाए, नुकसान तो नहीं है ना, मुजरे सेहत तो नहीं है ना ज्यादा नॉलेज. तो जरा जंप लगाते हैं अंदर, थोड़ा सा अंदर जाते हैं, टेक्निकलिटीज में जाते हैं. तो घबराओगे तो नहीं, घबराना नहीं जवानों, कमर कस लो.
सो डिफेंस एंगल को देखते हैं ना, जरा ओपन करते हैं। पहले लिखें JF थंडर प्रोजेक्ट। Pakistan and China developing JF Thunder with 51 and 49% share, respectively. So officially, Pakistan owned the project, but heavily supported by Chengdu aircraft industry of China. Pakistan has built Block 1, 2, and 3, respectively. And Block 3 is considered state of the art. Block 3 is considered best aircraft with low price and high effectiveness. So Pakistan is developing its aircraft engineering and self-dependency in heavy mechanics. Number 2, a drone technology that Pakistan is developing, and one of the major country creating excellent drone with close collaboration of China. So Pakistan has more excellent drone, effective drones made by Pakistan, and these are far advanced than the Indian drones. So Pakistan is leading drone technology as compared to India. So एक तो आप एयरक्राफ्ट खुद बना रहे हैं, and your aircraft is more advanced than the Tejas, Indian Tejas, Tejas, Tejas aircraft. दूसरा, आप ड्रोन्स में बहुत आगे हैं. नंबर 3 पे आ जाते हैं. Electromagnetic spectrum that Pakistan has taken ability to control air communication, signal communication in particular areas according to its need. आपको याद है fantastic tea of Abhinandan? As Abhinandan aircraft came in the air of Pakistan, it became blinded. It was blind. Abhinandan aircraft blind हो गया, so was not able to communicate with control power, even control towers of India. Even was not able. Abhinandan was not able to communicate with the companions aircrafts. Even he was not aware about his height from the land.
about the area he was into. As he fall down, what was his first question? You remember? बताएं जी, जाकिर अक्सा बताओ जी, पहला क्वेश्चन क्या था उसका? खान साहब बताओ। जब वो गिरा तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा उसने जब लोग मिले उसको, करीब गए? जी, मैं कहाँ हूँ? और जब उसे कहा गया कि आप इंडिया में हैं, तो उसने जय हिंद का नारा लगा दिया है। तो उसे इतना भी नहीं पता था। वो जो लोग कहते हैं कि हमारा इसको जी अवार्ड दिया जाए, इंडियन ने उसको अवार्ड दिया बहादुरी का, और जिसको ये नहीं पता था वो क्या बहादुरी थी उसकी, जिसको ये नहीं पता था कि वो किस एरिया में है, तो वो उसको ये कैसे पता था कि मैं दुश्मन के पीछे हूँ, उसके मुल्क में घुस गया हूँ बहादुरी करके? उसको तो पता ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, किस मुल्क में हूँ। नहीं समझ आई बेटा। वो इंडिया ने उसको अवार्ड दे दिया है। कौन सा अवार्ड है भाई? मुझे तो हैरानी हो रही है। वो जो चक्कर उनका है, और अवार्ड देखो उसको उन्होंने रिटायर भी कर दिया है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। जस्ट कंफर्म्ड इट मुझे, जो मेरे तक जो, हाँ, वीर चक्कर, वीर चक्रा जो है वो उनको दे दिया है। वो चक्कर ही, वो असल में वीर चक्कर है ना, वीर को चक्कर ही दे रहे हैं हम सब, है ना? वीर भाई को कहते हैं ना, पूरी दुनिया को चक्कर दे रहे हैं। अच्छा, उजैर का जो क्वेश्चन आया ना, उजैर का क्वेश्चन सारे पढ़ ले, फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ। उजैर ने क्वेश्चन किया है, आई थिंक योर डॉक्टर उजैर, ये वही वाला उजैर है या कोई और क्लास में भी एक डॉक्टर उजैर है मेरे किसी? ये वही है कि ये कोई और उजैर है? अच्छा, जो उजैर तुम्हें मैंने पढ़ाया होगा, डिटरेंस, डिटरेंस पढ़ाया था, डिटरेंस बैलेंस ऑफ पावर के अंदर, फॉरेन पॉलिसी जब हम पढ़ी थी तो हमने इसमें पढ़ा था डिटरेंस। यू रिमेम्बर? बैलेंस ऑफ पावर फॉरेन पॉलिसी के अंदर हमने टूल्स पढ़ा था, याद है? और उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था पावर मैक्सिमाइजेशन एंड द डिटरेंस। बैलेंस ऑफ पावर अगर नहीं आप डेवलप कर सकते तो फिर आप डिटरेंस डेवलप करते हैं, याद है? और डिटरेंस ये होता है कि आपके मुखालिफ ताकतवर होता है और आप उसका लंबे टाइम के लिए उससे लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो ताकतवर है, वो बड़ा भाई है एक ऐसे छोटे भाई का जो उससे बहुत कमजोर है और कई साल छोटा है। तो डिटरेंस ये होता है कि जब आप किसी के साथ लॉन्ग टाइम नहीं लड़ सकते क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर नहीं है, इकोनॉमी आपकी उसके बराबर नहीं है, आपकी फोर्सेस उसके बराबर नहीं है, आपके बाकी फैक्टर्स उसके बराबर नहीं है, तो आपका बैलेंस, आपकी स्ट्रेटेजिक पावर बराबर नहीं है, आपकी डिफेंस लेवल पे आप उस के बराबर नहीं है, तो फिर आप डिटरेंस मेंटेन कर, मतलब आप एक ऐसा खौफ उसके दिल में प्रोड्यूस करते हैं कि वो आप पर हमला ना करे। और खौफ क्या होता है कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो उसको तबाह कर सकता है, उसको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरह का खौफ डेवलप करना दुश्मन के दिल में डिटरेंस कहलाता है। तो अभिनंदन को क्यों छोड़ा? अब बात समझ नहीं आई। शॉर्ट वॉर किसको सूट करती है? शॉर्ट वॉर करना भी एक डिटरेंस होता है कि थोड़ी देर के लिए आप किसी को तो उसके बराबर नुकसान लड़ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर नहीं है तो आप नहीं लड़ सकते। लंबी आप अपने से ज्यादा ताकतवर के साथ 1-2 मिनट के लिए बराबर मुकाबला कर सकते हैं, उसके बराबर उसको पंच मार सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए फिर आप नहीं लड़ सकते, उसके सामने नहीं टिक सकते। यू गॉट द पॉइंट? सो दैट्स व्हाई अब आपको अब भी समझ नहीं आ रही कि अभिनंदन को क्यों दिया।
तो क्या ये फेवर में था कि आप लॉन्ग टाइम वॉर के चांसेस प्रोड्यूस करते? मुझे बताइए ना उजैर, अब आपने सवाल पूछ लिया है तो बताइए। तो जब छोटा भाई शिकायत लगा के भाग जाएगा ना, छोटा भाई खंजर मार के भाग जाएगा, सुई मार के भाग जाएगा, सामने खड़ा होकर मुकाबला करेगा क्या? आप मेरे लेक्चर को पढ़ रहे हैं, समझ नहीं रहे उजैर, इससे बात आपको समझ आएगी। मैं कहता हूं कैच मी इफ यू कैन। आपको अपने ही पढ़े हुए में से जवाब मिला है? आपको डिटरेंस और बैलेंस ऑफ पावर की अंडरस्टैंडिंग इसका मतलब है ठीक नहीं हुई थी। तो हम डिटरेंस कैम करते हैं। हमारा फॉरेन, आपका फॉरेन मिनिस्टर, आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमेशा ये बयान देता है कि हम एट लीस्ट डिटरेंस मेंटेन करेंगे। हर दफा आपका वजीर आजम भी कहता है। तो क्यों कहते वो, तब भी समझ नहीं आती आपको क्या कह रहे हैं हम हमारा एग्रेशन मॉडल है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि हम बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन नहीं कर पाते। जब तो वो क्यों नहीं कहते, इंडियन क्यों नहीं कहते कि हम एटलीस्ट डिफरेंस मेंटेन करेंगे? इंडियन ने ये स्टेटमेंट कभी क्यों नहीं दी? प्लीज अंडरस्टैंड द रियलिटीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। मैं मुखातिब उजैर क्यों हूं, और लेकिन मैं आप सबको ही बता रहा हूं, आप सबको ही सुना रहा हूं। वो पंजाबी में कहते हैं, आप सुनाते बेटी को है ना? आप बताते बेटी को है, सुनाते नोह को है। आगे चले। आगे मुझे वापस आए, मैं कहाँ बात कर, अच्छा मैं लेक्चर आपको फिल बदी देता हूँ, मेरी बात सुने बेटा। मेरा लेक्चर ना ही मेरे का कोई स्लाइड से मैं पढ़ता हूँ, ना ही मेरे पास वो कोई नोट्स हैं कोई मैं वहां से पढ़ रहा हूँ। ये फिल बदी लेक्चर्स होते हैं। तो आप मुझे फौरन कनेक्ट किया करें, अक्सर तुम्हारी ड्यूटी है। मैं जो लास्ट पॉइंट था जो हमने बात छोड़ी थी, ताकि उसको आगे चले। हम डिफेंस एंगल की बात कर रहे थे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात याद आ गई। अब दूसरी पे आते हैं। J10C, you purchase J10C from China and you're about to take 25 and almost is completed I think। 25 J10C आपको recently complete कर दिए गए हैं या आपको complete होने जा रहे हैं। J10C from China, it's a very good aircraft that you have taken to compensate the number of F-16 in your air force। So F-16 is a very good technology that you were having for a long time, and you have secured this technology in 1983 due to the Operation Cyclone। Operation Cyclone आपने 1983 में जब किया, तो उसके बदले आपको F-16 मिले। F-16 American technology है, it's a very excellent, very good technology। F-16 made by Molten Haddon, Molten, Lockheed Martin, Lockheed Martin, Lockheed Martin कंपनी ने बनाया है। एक्सीलेंट एयरक्राफ्ट, एक्सीलेंट मशीन। तो लॉकहीड मार्टिन कंपनी का बना हुआ एयरक्राफ्ट है, अमेरिका का बेस्ट एयरक्राफ्ट है, और दुनिया में सबसे ज्यादा सर्विस में एयरक्राफ्ट जो है वो F-16 है। दुनिया में द मोस्ट सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट जो है वो F-16 है। लेकिन आपके पास जो इसका मॉडल है ना, वो ओल्ड वर्जन है। आपके पास कौन सा वर्जन है? ओल्ड वर्जन, दैट इज कॉल्ड फाल्कन। यू हैव F-16 फाल्कन। जबकि जो रिसेंट वर्जन है F-16 का, उसको कहते हैं वाइपर, F-16 वाइपर।
So you are having old version, so you need to reform it. You need to modernize it, modify it. But Americans are not ready to do this, not ready to help you to modernize it. So you went to China and purchased J10C, that is made on a reverse engineering of F-16. J10C is made on reverse engineering of F-16, and it is the competitor of a recent modern F-16S. F-16S जो उनका मॉडर्न F-16S है, ये उसका कंपिटिटर है J10C. So you have found alternate of modern F-16. So clear, my dear. तो आपका जो पैलेट है, your skilled air force will have a suitable alternate of F-16. So you do not need to change the machine. If you change the machine, you'll change the whole air force, and you lose the high professionality on that machine. You will lose the chemistry with that machine, and will take more time to develop new chemistry with new machine. More expenditures you have to spend for training, for securing professionality on that new machine. So clear, my dear. तो आपको बहुत सारे पैसे लगाने पड़ेंगे, बहुत सारा टाइम जाया होगा, आपको मॉडर्नाइज करने के लिए पूरी एयरफोर्स का स्ट्रक्चर तब्दील हो जाएगा आपके मशीन तब्दील होने से. सो फिर आपने इस चीज को सेव किया है, आपने एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की है, ट्रांजैक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं की. So we as a developing countries cannot afford transaction of technology. So we need advancement of technology, modification in technology. तो इसमें आपने किसने आपको हेल्प आउट किया फिर फाइनली? So thank you to China that has given you F-16 modern. नाम J10C है, वो है F-16 ही आपके पास, मॉडर्न शेप है. और बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो J10C इज मोर एडवांस देन F-16S. बहुत सारे फील्ड्स में उससे बेहतर परफॉर्मेंस है इसकी. So excellent aircraft you have, and interestingly you have taken it from your friendly state. Number 3, नंबर नेक्स्ट पे आ जाए जी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी हो गया. अब आ गया J31. J31 इसे FC31 भी कहा जाता है. J31 or FC31. It is an aircraft that Pakistan has planned to purchase from China, and China has confirmed this news. And China is going to provide it to you soon, before 2030. China will complete the transaction of your demanded J31 aircraft before 2030. So क्यों भाई, 5 साल के अंदर अंदर आपको ये डिलीवर हो जाएंगे. विद इन 5 years आपको डिलीवर होने जा रहे हैं एयरक्राफ्ट. और ये द मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट these will be.
because these are having 5th generation technology. ये 5th generation aircraft आपके पास आ रहा है, that is stealth aircraft. माला चाइना हैज कंफर्म्ड इट, एक्नॉलेज नहीं, कंफर्म्ड कर दिया इस डील को. उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ये हमारी डील हो गई है, जस्ट दे हैव टू डिलीवर इट नाउ. बस उनको ऑर्डर भी रिप्लेस हो गया है, मतलब उनको ऑर्डर भी बता दिया, दे दिया गया है. अब वो उस पर काम कर रहे हैं और आपको जैसे बनते जा रहे हैं वो आपको देते जाएंगे उस ऑर्डर के मुताबिक. तो विद इन 5 years ये एस्टिमेट किया जा रहा है, इट इज एस्टिमेटेड, यस, विद इन 5 years दे विल कंप्लीट योर ऑर्डर. नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट नहीं बताए गए कि कितने हैं. सो क्लियर माय डियर, काम हो गया, आगे चलें. अब नेक्स्ट पे आ जाएं. सो यू आर कोऑपरेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग फॉर modern tanks, Chinese companies helping Pakistan to develop modern technology for tactical weapons. According to American reports के मुताबिक Chinese companies helping Pakistan to provide different devices for the modernization in ballistic missile systems, especially in tactical weapons. जो tactical weapons हैं, अमेरिकन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है उनके एडवांसमेंट और उनको जदीद मॉडर्नाइज करने के लिए चाइनीज कंपनी हेल्प आउट कर रही है पाकिस्तान. दैट्स व्हाई अमेरिकन बैंड many Chinese company, sanctions many Chinese companies. So clear my dear? So it, अब आपको समझ आ गया डिफेंस एंगल की, मेरे ख्याल में आपको क्लियर समझ पिक्चर आ गई है कि हो क्या रहा है. In 2015 Pakistan purchased 5 submarine from China having worth of $5 billion. India alleged these were nuclear submarine that China provided to Pakistan. And according to SIPRI report in 2018, Pakistan purchased maximum weapon in South Asia. Pakistan purchased maximum weapon in Asia. तो दूसरे लफ्जों में वो कह रहे हैं कि एशिया दुनिया में ही सबसे ज्यादा वेपन खरीदने वाला मुल्क 2018 में कौन था? पाकिस्तान था. एंड मेजॉरिटी वेपन्स वर परचेज्ड फ्रॉम चाइना. एंड पाकिस्तान मॉडर्नाइज its navy and develop maritime navy in Gwadar.
गवादर में नई नेवी आपने डेवलप किया है, दैट इज कॉल्ड मैरीटाइम नेवी, और इसके लिए आपने वेपन खरीदा है बहुत ज्यादा चाइना से। पाकिस्तान परचेजिंग 47% of total export of 47% of total defense export of China. तो आपको समझ आ रही है कि आप चाइना के कितने बड़े कस्टमर हैं। Pakistan is purchasing 47% of total defense production of China, export production of China, total defense export production of China, जो चाइना एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्शन करता है ना, उसका 47% आप परचेज कर रहे हैं भाई। सो क्लियर माय डियर। तो ब्रेक करते हैं इसके बाद। अब ये आपका डिफेंस एंगल भी हो गया, आपको नॉर्दर्न वॉर थिएटर भी हो गया, आपकी हिस्ट्री भी हो गई। अब न्यूक्लियर कोऑपरेशन पे बात कर लेते हैं। देखें जल्दी से, क्योंकि फिर हम ब्रेक करने जा रहे हैं, टाइम इज वेरी शॉर्ट। अच्छा, इसमें आपको समझ आ रही है कि आपका स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स भी बहुत सारा। इसमें हम एक और चीज आपको पढ़ाते हैं। न्यूक्लियर कोऑपरेशन स्टार्टेड इन 1972 as China supported Pakistan technically to develop and to found nuclear project in Karachi first time. So foundation 1972, Chinese helped you to found a nuclear project, to develop nuclear project in Chashma nuclear power plant in Karachi. Later on, Chinese supported you on NPT issue. They support your stance. And in 1983, China provided you nuclear energy. In 1983, China was providing 300 megawatt for Chashma nuclear power plant. And later on, China provided you 5,000 custom magnetic ring. मैं बता रहा हूं कि चाइना ने 72 में आपको न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की बुनियाद रखने में जो टेक्निकल सपोर्ट थी वो प्रोवाइड की। 1983 में चाइना ने आपके साथ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड करने का एग्रीमेंट किया। 1993 में चाइना ने आपको 300 मेगावाट एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर दी चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। 3 बातें हो गई। चौथी, चाइना आपको 5,000 कस्टम मैग्नेटिक रिंग प्रोवाइड कर रहा है आज भी, टू मेक योर डिफरेंट वॉरहेड्स। तो ये न्यूक्लियर कॉपरेशन है। पॉलिटिकल कॉपरेशन पे आ जाए। पॉलिटिकल कॉपरेशन क्या है वो हम बात कर चुके हैं। पॉलिटिकल कॉपरेशन क्या है, वो ये सब जिसमें हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में हमने वोट किया उनके हक में 1961 में। इसके अलावा वी आर सपोर्टिंग देम ऑन ताइवान इशू। ठीक है। नंबर 2 नंबर 3 वी आर सपोर्टिंग देम ऑन हांगकांग इशू। वी आर सपोर्टिंग देम ऑन सिंकियांग इशू। हम उनको ताइवान इशू पे, हांगकांग इशू पर और सिंकियांग इशू पर सपोर्ट कर रहे हैं।
क्यों सपोर्ट, एंड चाइनीज आर सपोर्टिंग अस ऑन कश्मीर इशू. तो क्लियर माय डियर, चाइना हमें कश्मीर इशू पे सपोर्ट कर रहे हैं. अच्छा, हमारा स्टांस क्या है? चाइना को जब हम सपोर्ट कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हांगकांग इशू हो या सिंकियांग इशू हो, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इट इज द इंटरनल मैटर ऑफ चाइना. और ताइवान इशू के ऊपर हम क्या मानते हैं? ताइवान इज अ प्रोविंस ऑफ चाइना इंस्टेड ऑफ डिफरेंट स्टेट. वी आर नॉट एक्सेप्टिंग ताइवान एज अ डिफरेंट स्टेट. वी आर कंसिडरिंग ताइवान एज अ प्रोविंस ऑफ चाइना. तो क्लियर माय डियर. अब आ जाए, पॉलिटिकल भी हो गया. अब हम आ जाएंगे सी पैक के ऊपर, इकोनॉमिक. अब हम इकोनॉमिक एंगल पे आएंगे ब्रेक के बाद. इकोनॉमिक एंगल भी हम डिस्कस कर लेंगे, बीआरआई, और उसके बाद हम बीआरआई और आई मैक और उस पे चले जाएंगे. ठीक है, उसमें फिर कंट्रीज डिस्कशन होंगी, कंटेनमेंट ऑफ चाइना भी डिस्कस होगा. तो यहां तक सेशन कैसा रहा? वॉज एनीथिंग न्यू फॉर यू? क्या आपने लर्न किया? समझ में आया? ओके जी, गुड. कमिंग, नहीं, हम आएंगे 4:45 पे. 4:45. गुड बाय. 4:45 बैक करेंगे.